क्या ACCA एक फुल टाइम जॉब के साथ करना पॉसिबल है? अगर हाँ, तो कैसे और कितनी डिफ़िकल्ट होगी ये जर्नी? मैंने बात करी ऐसे ही एक प्रोफेशनल से जो ACCA को अपने फुल टाइम जॉब के साथ बहुत सक्सेसफुली मैनेज कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 5 ऐसे टिप्स की जिसका इस्तेमाल करके आप ACCA को अपने जॉब के साथ बहुत ही स्मूथली मैनेज कर सकते हैं। हाय, मैं हूँ CA गौरव अग्रवाल, 18 कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। 18 कॉमर्स अकेडमी पे कई सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपने टफ जॉब स्केड्यूल्स के साथ अपनी पढ़ाई CMA USA की या ACCA की साथ में कर रहे हैं। और कुछ ही समय पहले मैं मिला लखवीर गिल से, जिन्होंने अपने जॉब के टफ स्केड्यूल के बावजूद 9 पेपर्स क्लियर कर लिए हैं और अभी अभी अपने प्रोफेशनल लेवल में उन्होंने एंटर किया है। अभी रिसेंटली जून के एग्ज़ाम्स में उन्होंने अपने आखिरी स्किल लेवल के 2 पेपर्स क्लियर करे हैं, FM और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वो भी 3 महीने की प्रिपरेशन में, और दोनों में ही 73 मार्क्स को लेकर के आई हैं। इस वीडियो के अंदर उनके साथ जो मेरी बात हुई है उसकी कुछ क्लिप्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, बट आई एनकरेज यू कि आप पूरा पॉडकास्ट देखें, और वो देखने के लिए आप मुझे लिंक्डइन पर फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक करना मत भूलें। टिप नंबर 1, कंसिस्टेंसी। मैं कई सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को पढ़ा चुका हूँ। फ्रॉम एक्सपीरियंस में ये बात जानता हूँ कि आप ज़्यादातर क्या करते हैं, 5 दिन हम काम करेंगे और जो सैटरडे संडे की छुट्टी मिलती है सारा जोर उसमें लगा देंगे। यूजुअली ऐसा करना शुरू में पॉसिबल तो लगता है, बट ये सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सैटरडे संडे पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो आपकी वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी, और कई बार हमें घूमने जाने का मन भी करता है और इस तरह से लगातार पढ़ाई के अंदर ब्रेक आना शुरू हो जाता है। मेरे हिसाब से आपको 7 दिन पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके। एक भी दिन आपका ऐसा नहीं जाना चाहिए जब आप पढ़ाई ना करें, और यही कंसिस्टेंसी आपकी मदद करेगा ACCA जैसे टफ कोर्स को कंप्लीट करने में अपने जॉब के साथ। देखें लखवीर का इस बारे में क्या कहना है। For one paper, like earlier in March, I gave the paper of tax. It was really like more than manageable. Very easily I could manage. I did not even feel any difference in my life when I was preparing for that paper, because weekend was always there, and I gave just 4 to 5 hours each day, Saturday and Sunday, and it was just done that way. But when I was preparing for 2 papers, I knew that hard days are really going to come. And to be honest, even a lot of students, they ask me questions on LinkedIn about how I was managing my time. And I told them, like, it's as simple as that. You have to give 3 to 4 hours every day, no matter how you are managing that. टिप नंबर 2, मैनेजिंग टाइम। देखें ये तो क्लियर है कि एक वर्किंग प्रोफेशनल जो फुल टाइम काम कर रहा है उनका काफ़ी बिजी स्केड्यूल होता है। पहले घर से ऑफिस जाना, फिर वहाँ बैठ के काम करना, फिर वहाँ से वापस घर आना थके आ रहे, और उसके बाद किताब उठाने का मन नहीं करता। इसके बाद कुछ बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे कि मंथ एंड हो जाता है या क्वार्टर एंड या ईयर एंड के अंदर ज़्यादा काम भी करना पड़ता है, पर पढ़ने के लिए समय तो निकालना होगा। इसीलिए एक साथ बहुत ज़्यादा पढ़ने की बजाय मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कोशिश करें स्मॉल पॉकेट्स ऑफ टाइम निकालने के। आइए देखते हैं लखवीर ने अपना टाइम कैसे मैनेज किया। You have to give. Earlier, I was working from office. So I used to report at 10 o'clock, and I came back home. My office ends at 6. So I came back home by 7, 7:30. So even in office, I always knew this is my work of the day. I have to complete it no matter what. If I'm cutting on my lunch time, if I'm taking my tea as fastly I can, just doing anything and everything in my hands to make my work completed at the end of the day, so that I am able to push off by the time. और स्किल लेवल के 2 पेपर्स कैसे उन्होंने 3 महीने में कंप्लीट कर लिए वो भी देखते हैं। I gave 1 complete hour on jotting down everything by my own hand. Whatever I have learned today, I'll just make a flow chart, so that when I revise, we all know that professionals do not have enough time to work on study text or to watch all the recordings again when they are in that revision mode. So pocket notes and the summaries at the chapter ends in the study text, and the notes that you jot down by your own are really something that can help you. You just read them and everything just clicks in your mind. So whatever you write, it just helps you memorize the things. So I worked that way. So that was what made me complete my syllabus of one subject in around 20 to 25 days. And weekends was always like 1 chapter a day plus
Last 5 chapters revision. Repeat. टिप नंबर 3, सैक्रिफाइसेस। देखें, सब कुछ तो हमें मिल नहीं सकता। एक वर्किंग प्रोफेशनल की लाइफ में ना कई सारी टेम्पटेशंस होती हैं। हम हमारे कलीग्स के साथ कहीं घूमने चले गए, सैटरडे संडे को कहीं पार्टी कर लें, और मुश्किल तो तब हो जाता है जब लोग अपने गोवा जाने की या कहीं घूमने फिरने की पिक्स डालते हैं। आइडिया इज़ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एंड कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड। आइए देखें लखवीर ने क्या क्या सैक्रिफाइसेस करे, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करे। Well, this is something really touchy because I had to lose a lot of friends in that journey of mine. Everyone thought that actually I shifted to Gurugram for this work only. But we have that people have that myth that once somebody goes to a bigger city, somebody goes out, they tend to forget people. They are all high and mighty in their own, and they are full of attitudes. Their mindset changes, and it is, trust me, guys, it is really not like that. All the students who are shifting to foreign countries or probably moving out for studies or probably for work, you don't know if they have enough time for having their meals, if they have enough time, like 15-20 minutes a day for listening to music before a good night's sleep. So that everyone needs to understand. Like it helped me filter out the people who were so superficial that they could not understand my conditions, they could not understand what I was going through. Instead of encouraging me, they came calling me and you have no time for us. I'm like, okay, if you have no understanding of my viewpoint, I have really no time for you, not now, not in the future. So I really cut off from those people. I really don't want those people who can't even have an understanding of me. What are friends for? Really? And they can't stand with you in your highs and lows, or instead of saying you go girl, we are really proud of you, they're like, you don't want us. That superficial relationships are there. So even with my parents, I had to cut off family time with my friends, and there where every girl was working, but they were free from their studies. They had done their masters. They were also elder, so they used to go out on weekends. They always invited me, and I always denied. So denying that also like hurt me somewhere. Why can't I be a social butterfly like these girls are? But then again, no. I'm going to have it in the future. I always had that thought. I'm going to have a brighter future. टिप नंबर 4, पढ़ाई को आसान बनाया जा सकता है। कैसे? देखें, आप पढ़ाई के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर जब ध्यान देते हैं तो पढ़ने में आपका इंटरेस्ट भी आता है, पढ़ाई में आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, और एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस भी इसकी वजह से अच्छा होता है। पहले भी मैं कई सारे पॉडकास्ट कर चुका हूँ, काफ़ी वीडियोस में कह चुका हूँ कि जब भी आप कुछ पढ़ाई करते हैं उसे रटने की बजाय या फिर बुक में दिए गए आंसर्स के हिसाब से आंसर लिखने की कोशिश करने की बजाय आप उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखें तो आप बेटर तरीके से उस सब्जेक्ट के अंदर जो है परफॉर्म कर पाएंगे। आइए देखें लखवीर का क्या कहना है इस बारे में। And PM and FM something, they are the subjects that I can relate to. Like those are the things that you don't need to have a cramming of, like very basic things, setting budgets, or like FM included a lot of topics that you have already studied in probably economics in +1, +2. So those are things that I could relate to. Even we have given previous papers, management accounting, I did not get an exemption for that. So I had worked on that as well. So that was what provided me as like a startup, a basic foundation for studying PM. Works for me for PM as well. I never knew it was difficult because I never took it as a difficult subject. Trust me guys, if you don't take it as something that is difficult, you will find it easier no matter what. So I just understood the concepts. What are budget? Zero-based budgeting. The name suggests this. Rolling-based budgeting. The name suggests it. So you just have a thing in your head. You just read it and you read it from that point of view. I've seen a lot of students who work on exam kits more than they work on study text. Like I don't get it. How will just questioning, reading the questions, how would it ensure good marks in the paper when the paper is not going to ask you the same questions? So this is something that is very, very much like basic, that go home for exam kits until and unless you're done with your syllabus. Exam kits are for you to make you realize where are the points that you are lacking. Where do you need to study more? Not for you to study from it itself. टिप नंबर 5, मोटिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। जब भी कोई एक टफ गोल आप अपने सामने रखते हैं, उसे परस्यू करने की कोशिश करते हैं, कई बार अपने आप को मोटिवेटेड रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो शुरू करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए होता है हमें। तो लखवीर का शुरू करते समय ACCA को क्या स्ट्रॉन्ग रीज़न था, आइए देखें। Then I realized that what we have been studying so far is actually not that relevant here. It is ACCA that made me realize, yeah, ACCA is actually preparing the skills that is required in the corporate culture actually. सबसे ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होती है पढ़ाई को कंटिन्यू करने में, क्योंकि शुरू आपने कर लिया, वो ठीक है, वन टाइम डिसीजन है, बट उसे कंटिन्यू करना 2.5 साल तक कंसिस्टेंटली, इट रिक्वायर्स इवन अ बिगर रीज़न। मेरे लिए था कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड करूं, और उसी ने मेरे को लगातार जो है मोटिवेट किया। आइए देखें लखवीर के लिए क्या मोटिवेशन थी। When I work, when I look at my managers, when I look at the managing partners, the authority they hold, the kind of work they do, the kind of experience they have, I always wanted to be there. I always wanted to be someone of that, the same authority. And that is what motivates me to study harder. I always thought that, okay, I can only study or I can only work one thing at a time. Of course, it can give me the mental peace, it can give me the good social life, but I am cutting off everything because I want to have a better future. I can compromise today for a year, probably for 2 years. But after 2 years, I would never want a situation in my life where I have to compromise with any of my choices. So finally, conclude करने के लिए, yes, जॉब के साथ पॉसिबल तो है, मगर आसान नहीं है, मुश्किल है। आपको मोटिवेटेड रहना होता है। अगर आप मोटिवेटेड नहीं हैं या आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन नहीं है, तो मेरे हिसाब से सब छोड़ छाड़ के आपको थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। बिकॉज़ अगर आप मोटिवेटेड अपने आप को नहीं रख पाते हैं, मैंने कई प्रोफेशनल्स को ऐसे भी देखा है जो 1-2 पेपर्स क्लियर करने के बाद भी ACCA छोड़ देते हैं। मेरा यही कहना है कि आप कोशिश करें, समझें कि क्या चीज़ आपको अंदर से ड्राइव करती है, और फिर आप किसी भी कोर्स को, भले ही ACCA हो, भले ही CFA हो, आप तभी पिक करें जब आपके अंदर से एक ड्राइविंग फोर्स आती है। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट मोटिवेट्स यू, एंड येस यू विल बी एबल टू मैनेज इट। मैं ये भी एक्नॉलेज करता हूँ कि हर वर्किंग प्रोफेशनल की सिचुएशन अलग होती है, चैलेंजेस अलग होते हैं। ये बात तो सब में सिमिलर है कि एक बिजी वर्क स्केड्यूल होता है, बट उसके बावजूद बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। एंड देयरफॉर आप अपनी सिचुएशन में कैसे और बेटर तरीके से कोर्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, या डिस्कॉर्ड सर्वर पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से मेरे से पूछ सकते हैं, एंड आई विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सभरवाल आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में।